Hello and what's up guys, this is Ricky and welcome back to another video and another Chinese product. So आज मैं बात करने वाला हूँ Realme X3 और X3 Zoom के बारे में जो एक और Chinese phone है I know and इस वीडियो के थ्रू I want to talk about this current situation. I know India और China के relations are not the best currently and hence लोग कह रहे हैं कि boycott Chinese products. But tell me one thing, is it really possible to boycott Chinese products? मतलब if given a choice, मेरे को भी अगर option मिले, I would like to boycott Chinese products because the things that are going around are obviously not the best things. But in a country like India, जहाँ पे majority लोग buy the phones between 10,000 rupees to 25,000 rupees, उनके पास options क्या हैं? Like they have the options of buying Samsung और Moto phones जो अमेरिका के हैं, and बाकी जो companies are left in this price range are MI, Vivo, Oppo, Realme, OnePlus. So all these phones are Chinese phones and we all know the Chinese products have lower price and hence people are still buying these phones because अगर हमें option हो तो हम क्यों लेंगे Chinese phones? So basically what I'm trying to say is कि rather than saying boycott Chinese products, I want you to raise your voice for the right things. Like compel or appeal to your government that they support their local manufacturers. हमारे इंडिया में कार्बन और माइक्रोमैक्स के फोन्स आए थे एंड दे वर एज गुड एज MI फोन्स अपने टाइम में, बट अब हमें उनके फोन्स क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? द रीजन इज दैट आवर गवर्नमेंट हैज नॉट बीन सपोर्टिंग देम और मे बी वट एवर माइट बी द केस. क्या रीजन है कि वो कंपनीज डिड नॉट डू वेल? इट्स बिकॉज के दे वर नॉट मेकिंग प्रॉफिट ऑब्वियसली. तो अगर हमारी गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करती तो हमारे इंडिया में प्रोडक्ट्स बनते. सो लाइक दिस इज अ सेंसिटिव इशू फॉर मी. आई वॉन्ट टू बॉयकॉट चाइनीज फोन्स बट ऑनेस्टली हम नहीं ले सकते और कोई फोन्स, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है. सो इट्स ऑन यू गाइस. इफ यू हैव द ऑप्शन टू बॉयकॉट चाइनीज फोन, इट्स रियली गुड. But I would say that you should pressurize your government rather than using hashtags like boycott Chinese products. You should use them, but just know कि इनका उतना impact नहीं होगा. So finally coming back to Realme X3 and X3 Superzoom. So सबसे पहले तो बात करते हैं इन दोनों फोन्स के बिल्ड डिजाइन के बारे में. दोनों का बिल्ड डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है. Also इस वीडियो में I will be mostly talking about the X3 Superzoom because X3 Superzoom and normal X3 में ज्यादा कोई फर्क नहीं है. दोनों का बस कैमरा सेटअप दैट इज द सेल्फी कैमरा एंड द मेन कैमरा, सिर्फ वहां पे डिफरेंस है एंड आई विल मेंशन दैट. अदर देन दैट एवरीथिंग इज सेम इन दिस फोन. सो दिस फोन कम्स विद ग्लास स्क्रीन एंड ग्लास बैक जो हमें यूजुअली सब में देखने को मिलता है एंड कोई इस पे फिंगरप्रिंट्स हमें ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे एंड स्मजी नहीं होगा इसका ग्लास बिकॉज टेक्सचर ग्लास है इसका. फ्रंट में हमें 6.6 इंच IPS LCD 1080p डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड आई गेस दिस इज वन ऑफ द फ्यू एरियाज जहाँ पे इस फोन में कॉस्ट कटिंग की गई है. यूजुअली हमें फोन्स में AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है बट इसमें LCD है एंड आई फील इस फोन में वो AMOLED डाल सकते थे बट आई गेस इट वर्क्स फॉर द प्राइस. One of the biggest and best things about this phone is the 120Hz refresh rate. And honestly, I'm a fan of the higher refresh rate and that just makes your experience really smooth. So next up we have the software and chipset of this phone. This phone comes with Android 10 and has a Snapdragon 855 Plus chipset, not the latest 865. Now this is another place where I feel they have cut their cost. And also since ये 855 Plus chip है, that means that this phone is a 4G phone. Now since this is not a 5G phone, some people might be thinking seeing down the line 5G phones are what they need. But trust me, आपने फोन 2 या 3 साल ही चलाना होगा at max and that is the time 5G को इंडिया में आने में लगेगा. So be completely chill about that and go ahead for this phone if you really think you want to buy this phone. And also 855 Plus chip is not even more than 1 year old. So जो performance होगी वो भी completely smooth होगी, ज़्यादा फर्क नहीं आपको देखने को मिलेगा. And easily this phone will have a good performance for around 2 years. Also this phone has the Adreno 640 GPU, so आपका basically जो phone में games हैं and जो overall experience है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा. No complaints in that. दोनों phones ही different memory variants में आते हैं and lowest price for the X3 phone with 6 gigs of RAM and 128 gigs of internal storage starts from 25,000 rupees and goes up to 33,000 rupees for 12 gigs of RAM and 256 gigs of internal storage in the X3 Superzoom variant. Now X3 Superzoom variant 28,000 से start हो जाता है with lower memory variants and I guess that is the best phone to buy because अगर आप X3 ले रहे हो it has lower camera quality but if you just spend 3,000 more and you will get the best cameras and I think memory variant of 8 gigs of RAM and 128 gigs of storage is pretty decent. Now moving on to the camera section and this is the section जो Realme ने अपने event में काफी ज़्यादा boast किया
They have multiple modes for multiple types of images, and I think it is going to have a decent camera considering that it is a Realme and it's their flagship phone. Literally इनके launch event में जो maximum time devoted था वो camera module की तरफ था. They were really boasting their cameras a lot, and the major modes that they have were tripod mode, nightscape 4.0, starry mode. Now the starry mode looked really amazing, and other phones have already done this, but it looked really good. So I'm really looking forward to trying that mode. But all in all, the camera sensors are something like this: 64 megapixel main camera, 8 megapixel periscope telephoto camera, 8 megapixel ultrawide camera, and a 2 megapixel macro camera. So जो periscope telephoto camera है gives us 60 times zoom, and ये बड़े नंबर हमें almost हर फोन में देखने को मिलते हैं. I don't really know किसको 60 times zoom चाहिए and कहाँ पे तुमने देखना है, but they give that, and that is kind of a marketing feature for this phone. Also, the main camera can shoot 4K 60 fps videos and 720 960 fps videos for slow motion. The normal X3 phone has just one camera different, that is it does not have the periscope telephoto camera, it has just the normal telephoto camera, and जो front cameras हैं वो भी दोनों phones के slightly different हैं. Both the phones have dual camera setup in the front. होल पंच कैमरा कटआउट देखने को मिल जाता है हमें दोनों की फ्रंट स्क्रीन्स में. बोथ द फोन्स हैव 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, बट सुपर जूम में हमें 32 मेगापिक्सल मेन कैमरा देखने को मिलता है, एंड नॉर्मल X3 में हमें 16 मेगापिक्सल नॉर्मल कैमरा देखने को मिलता है. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट सम अदर फीचर्स, बोथ द फोन्स डोंट हैव ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, जस्ट मोनो स्पीकर्स दैट आर क्लेम टू बी रियली लाउड, एंड दोनों में ही हमें 3.5 mm जैक नहीं देखने को मिलता है. फिंगरप्रिंट सेंसर भी इज नॉट अंडर डिस्प्ले, इट इज साइड माउंटेड, एंड दैट इज समवेयर आई फील कि इन्होंने कॉस्ट कट करी है, बिकॉज अदरवाइज इस प्राइस रेंज में हमें यूजुअली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स देखने को मिलते हैं. So that is one thing, but that doesn't really bother many people, I feel, अगर वो इस प्राइस का फोन ले रहे हैं. And also since ये एक physical sensor है and not an optical fingerprint in display sensor, तो ये काफी fast भी होगा, so that is a plus point. Battery in both these phones are pretty decent, 4200 mAh की बैटरी है दोनों में, and also we get 30 watt charger right in the box, and that is a really good thing because fast charging काफी जरूरी है in today's day and age. So all in all, both the phones are really good according to me, and super zoom वाला जो variant है वो काफी ज़्यादा अच्छा है according to its price, and I feel I would recommend this phone. Besides the fact that it is a Chinese phone, that's your personal preference, I won't say anything about it. And I feel Realme ने काफी ज़्यादा अच्छी जगहों पर cost cutting करी है, and that is another reason why I would recommend this phone to others. So on that bombshell, this is it from my side, guys. Let me know in the comment section below whether you would buy this phone or not, and also let me know in the comment section below whether you would like a video from me where I can suggest some substitutes for these Chinese phones in mid-range. And just like that, I hope you liked the video, and if you did, be sure to smash that like button and hit the subscribe button if you haven't already, and I'll see you in the next one.